So in this session, we'll start with financial systems and procedures. So can you guys just suggest me what do you mean by a system? What do you mean by a system? Or can you give me any example of a system? Example of a system. Hmm? Rules and regulations, okay. What else? What else? What do you mean by a system? System. System. A fixed structure to something, okay. What else? कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या सिस्टम का आप लोग? Can you give me an example? What a system is, how? Education system. Like the system is defined. आप जब 3 साल के होंगे तो you should go to the school. You should start with play school, kindergarten, 1, 2, और क्या बोलते हैं? LKG, UKG, then 1 to 10th. Okay, 1, 2, 3, 4. This is a system. This is defined. If a child has to get educated, they have to go through this route. That's a system which is defined. Yes or no? That's basically a system which is defined. Then there is if a person has to be elected as the prime minister or the president of a country, then for that again there's a system defined. If there's democracy and parliamentary rule, then there will be two parties. There's Lok Sabha, there's Raj Sabha, there's ruler, there is opposition. And then people come in to vote in a systemized manner. Now, what happens next, don't say me, but people come in a systemized way to vote. Now, when they come to vote in a systemized manner, what happens is they can vote according to their area, and then once they vote according to the area, they vote it to the local authorities, and then slowly it goes further up, and the winner wins it up in the triangle. That's a system. Suppose you want to purchase a book from our very own Himalayas. Okay. What is the system for it? Can you define, Rehan? Himalayas से बुक खरीदना है तो मतलब Himalayas bookstore, not the Himalayas. Yeah. जाना दुकान पे, बुक सेलेक्ट करना ना, काउंटर पे जाना, काउंटर पे पे करना, and then you take the good and you walk out. Okay. Now what happens in the background? Let's look in towards the background of that system. Ab dekho, when you go there, like this is a book which you want. What will he do? He will take a scanner and he'll bill that out. Okay, this is the amount, this is the bill which you have to pay, and here's the bill. Now just understand, on the back end of the guy sitting on the counter, does he know much about how the business would be run or how the whole work goes on? Most probably not, because the owner won't be sitting there. There will be a person known as the cashier or the biller. He would do all the process. Now let us understand, how do they get the books into the store? How do they get what all they are selling inside the store? Is mere by purchasing it by a supplier? Yes or no? They are purchasing by a supplier. Now they are purchasing by a supplier. What is the method of purchasing? What is the system of purchasing? You've also done the system of purchasing in the materials chapter. Materials chapter starting we've done it. If you guys remember, in MA. Well, a system of purchase.
Okay, a system, a structure. Like you would not purchase any from any Tom, Dick, and Harry, any random person. You will not just purchase it. You will purchase it from an authorized supplier or a person who is respectable, or an organization which has a really good background about what they are supplying. They are good in it. Then yes, okay. Now you will check. You will ask for quotations. मतलब कहाँ पे अच्छा हो रहा है, कैसे कहाँ हो रहा है, where I can get the best books, where I can get the best stationery quality. Who's doing this? Himalaya as a bookstore is searching out for suppliers. Then what will happen? Once he selects, once the best quotation is selected, then he will order. Okay. And then it comes to you. You either pay the payment then and there, or you say that I'll pay after a few days according to the agreement. So what has happened just now? We have followed a system to do it. And which system is it? Purchase system. Yes or no? The same goes with sales system. अब जैसे कि देखो, अगर आप लोग को घर पे कुछ काम कराना है, ओके, जैसे कि एक suppose you want to set up some gaming zone at your home, and पूरा एक वो क्या बोलते हैं उसको, ट्विच, राइट? यू नो ट्विच? ट्विच से क्या करते हैं? हाँ, स्ट्रीमिंग करते हैं। जैसे कि आपको पूरा ट्विच का अच्छा और सेटअप करना है, जैसे पीछे ग्रीन स्क्रीन है, और वो साउंड प्रूफ अकॉस्टिकल्स है, और क्या है, थोड़ा थोड़ा गेमिंग के उसमें अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, कैमरा एंड स्ट्रॉन्ग माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। अब इन सब के लिए आपको क्या लगेगा? कॉस्ट लगेगा ना। फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू गो एंड परचेस? व्हाट्स गोइंग टू बी द सिस्टम टू परचेज इट? You'll go out, find out the best of the best, and then you will go ahead, and the whole process goes on. Now this is just one small process, but you can take into organizations by organizations. Organizations have separate departments called procurement departments who would do the work for them, who would go out there and procure it for them as a team, as you know, as people representing that organization. So in that same manner, let's move forward and go through some of the systems and stuff. So a system is a group of independent but interrelated elements comprising a unified whole, a process for obtaining an objective, and it is not a rule, it is not a regulation. Remember this, it is a process. Purchase process, sales process, ordering process. It's not a rule. Each organization will have its own. Okay, each organization will have its own. So what you have to do here is just make out the best plan for it. Okay, make a best plan for it, write it down. Then a policy is a guiding principle, a procedure, series of acts, set of sequence steps. Guidelines is a recommended approach for conducting tasks. I hope you know the difference between all these four: system, policy, procedure, and guideline. Now, suppose XYZ Limited has developed a new sales system. Its policy is to process orders from customers efficiently and to dispatch goods within 2 days. The system contains procedure for the ordering, dispatching, and invoicing, the receipt of payment for goods to ensure the policy is followed. It also has guidelines on assessing the creditworthiness of new customers. मतलब वो कस्टमर पे कर पाएंगे या नहीं हमको टाइम पे, is a big question of trust. Is a big questions of assessing the credit worthiness. Credit worthiness के मतलब इसको उधार दे सकते हैं या नहीं. Will he
pay on time? Will he pay within few days or not, as promised? Will he honor his promise or not? Big question to ask. Okay. Then give an example of each of these terms within the context of enrolling for an ACCA course. What is the system of the policy, procedure and guideline? Guideline तो मैं आपको guide करूंगा ही. Procedure क्या है? For that procedure, you should have your documents ready, your 12th marks memo ready. Once you have that marks memo, what you can do next is start your enrolling process, and that's a procedure. And a system has to be followed. Like first you enter all the documents, enter your details, submit it to them. Now what will they do? They will go cross check, verify, okay, check your eligibility, which program you can get started with, like which level you can get. So most of the time it will be knowledge level only, then you can get started with it. Sometimes when people put in their degrees like a BCom or a BBA, BCom gets four papers exempt, a BBA gets one paper exempt. So like that, they give exemptions to them and then they start their process. I hope you guys are getting it. So basically ये एक है एक formal system. This is the formal system to be followed. अब जैसे कि देखो कभी भी किसी मूवी में या if you just see that, अगर कोई if someone is क्या बोलते हैं उसको accused for the charge of a murder or attempt to murder or whatever it is, he is accused until proven guilty. Okay, he is accused and innocent until proven guilty. Do you know that? मतलब जब तक सख्त पुख्ता सबूतों और गवाहों को आप सामने नहीं लाएंगे, जब तक वो नॉट गिल्टी है. ठीक है. Now here, understand this, how are things happening in here. If someone is accused है और उसके खिलाफ चार्जशीट निकली है तो फिर जाकर उसको अरेस्ट कर सकते हैं. अगर उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं निकली है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते. बस शक के बिना पे आप उससे पूछताछ कर सकते हैं लेकिन अरेस्ट नहीं कर. तो ये देखो क्या है, ये फॉर्मल प्रोसीजर्स है. अगर अगर किसी मतलब इफ यू वांट टू टॉक टू एन अक्यूज्ड एंड द अक्यूज्ड सेज दैट मुझे आपसे बात नहीं करना है, मुझे लॉयर चाहिए, तो फिर क्या बोलेंगे? तो ये एक फॉर्मल प्रोसीजर्स की तरह, फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस की तरह चलते रहता है. दिस इज द एडवांटेज ऑफ फॉर्मल रूल. हर जगह ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है, लेकिन देयर इज ऑलवेज ओवरपावरिंग एंड ऑल दैट स्टफ हैपनिंग अराउंड. Okay, that is advantage of a formal system. Auditors can follow transactions more easily if they are recorded in the same way. एक फॉर्मल तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत इजी रहता समझना कि आपका काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और how many people are there. Like suppose if you are talking about sales, you should have a proper set of data that how much sales have you done, what products have you sold, stuff like this. Now, it is particularly important to have formal policies and procedures in place when organized, such as solicitors or banks handle money on behalf of their customers, as the money does not belong to the business, and it is vital that the controls to place help prevent the loss of client funds, either through fraud, theft, accidental loss, and such going on further. तो यहाँ पे बैंक्स जो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ही के पैसे है ना, how are they going to use it? It should be in a formal manner. Otherwise, नहीं देखिए क्या हुआ था उधर, दैट स्कैम 1992 में क्या हुआ था. बैंक के पैसों को इस्तेमाल करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करके पैसे बढ़ाकर अपने फायदा करके वापस कर रहे थे. दैट वाज अ नॉर्मल प्रोसेस गोइंग ऑन बैक देन. सो टू अवॉइड दैट आपके पास होना चाहिए प्रॉपर डिजाइन फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, प्रॉपर डिजाइन फाइनेंशियल सिस्टम, दैट दिस इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड. इफ सपोज यू आर बुकिंग अ फ्लाइट, ओके, अभी आजकल एक नया आया है, आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और नॉट, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, बट वी शुड बी केयरफुल इन दिस मैनर. फ्लाइट ओवर बुक होने की वजह से आपकी फ्लाइट क्या मतलब आपकी बुकिंग कैंसिल हो सकती है. डू यू नो दैट? इफ यू डोंट चेक इन टूवर्ड्स इट, अर्ली चेक इन अगर आप नहीं करें तो फ्लाइट में ज्यादा बुकिंग होने की वजह से यू कैन योर बुकिंग कैन गेट कैंसल, द फ्लाइट विल गो ऑन इट्स टाइम. जस्ट थिंक अबाउट इट.
See here, that's the importance of a system. That's why they say that you have to do early check-in, web check-in, कि yes I am coming in, head count होना जरूरी है, तभी एक प्रोसेस फॉलो होता। अब जैसे कि हमारे विराट भैया भाभी की शादी थी लास्ट टाइम, तो उसमें क्या था, एनी रैंडम पर्सन कैन नॉट जस्ट एंटर, राइट? एनी रैंडम गाय कैन नॉट एंटर, यू शुड हैव व्हाट a proper invitation, then only you enter, और फिर वो स्क्रीनिंग करेंगे कि it's not just a random guy coming in here। क्या है यहाँ पे सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। Now talking about financial systems, okay? Financial systems here is, suppose आप Amazon पे पेमेंट कर रहे हैं कोई चीज खरीदने के लिए, what does Amazon do there? Just understand this. Amazon does not directly go ahead and pay towards the supplier from whom you've purchased it. It holds until they receive it, the customer receives it, customer receive करके satisfied है, 13-14 दिन तक, जब तक वो रिटर्न पॉलिसी खत्म नहीं होती, completely satisfied, then Amazon is going to give the share to the supplier, main supplier। समझने वाली बात है ना? See, otherwise what will happen, control will go off। एक बार पैसे चले गए उधर, रिटर्न का टाइम भी खत्म हो गया, तो फिर he will not be able to return all that stuff। वो लोग क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं, that's a system। Even today, financial systems, payment systems, buying systems where finance is involved, it should be highly structured। वो रूल्स रेगुलेशंस रहे तो ही वो फॉलो होगा, वरना खाली अब्यूज होगा। नहीं तो नहीं, देखिए ट्रम्प क्या क्या करा पहले, अभी नहीं, पहले से मतलब, because of the financial system was not that strong, he utilized a lot of that way of misusing taxes। अभी देखो, from here on it's pretty simple and straightforward। The designer then needs to consider the most likely sequence of events from inputs to outputs। अब suppose देखो, order received, goods dispatched, invoice sent to customer, sales record in accounts, payment received from customer, outstanding amounts followed up। सिंपल प्रोसीजर है। ऑर्डर करो, गुड्स डिस्पैच हो जाएंगे, इनवॉइस आ जाएगा, सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगा, पेमेंट रिसीव हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। सो लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब जैसे कि ये प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम है अमेजोन के ऑर्डरिंग प्लेसेस के, वेयर इज द ऑर्डर, यू नो इट। और राइट नाउ दैट डिलीवरी सिस्टम इज हैज बिकम सो एफिशिएंट एंड स्ट्रांग that you know where your parcel is, you can track exactly where it is right now। What can go wrong though? Well, less things can go wrong। Using the example of a student enrolling for an ACCA course, objectives, outputs, inputs, what could go wrong? ये तो आप लोग फिर से fill कर लो अपने तरफ से, but for now I'm moving forward। Purchasing system, I'm not going to invest more time here, as you guys have I've just explained a lot about it just earlier। परचेजिंग सिस्टम में पहले क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझको ये चीज चाहिए, ओके, आई वॉन्ट दिस मटेरियल और आई वॉन्ट दिस गुड। तो क्या होता है नेक्स्ट, यू ऑर्डर इट, you receive the goods, you order the goods, and then the goods get dispatched and you receive it। Moving further, you'll receive the invoice and you will have to pay the invoice। Yes or no? Simple। परचेजिंग साइकिल का एक एग्जांपल भी दे दिया वो लोग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग हैंडबैग्स, you request on that you need so and so these many systems or something like that। लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है, it's not just happening manually, okay? There's a system designed on computer itself, like either they are using an ERP, which is enterprise resource planning, like a QuickBook or a Salesforce or SAP, Oracle, something like this, they are using it and they are placing it। अब ये काम करने के लिए all these requisitions and ordering to be done,
Can anyone do it or only authorized persons can do it? Authorized persons can do it. फिर ordering, invoice received, invoice recorded, payment made. Same process keeps on going again and again. ये purchase cycle का एक tertiary understanding है. Again, I am not going to do this because बहुत ज़्यादा basic है आप लोग के लिए. Then comes sales system. Sales system में क्या होता? आपको order आता, आप वो order process करते, मतलब उसको ready करते dispatch करने के लिए. उसके बाद आप उसको dispatch करते, dispatch के साथ साथ invoice भी भेज देते, record भी कर लेते, और जब payment आ जाता उनके तरफ से, you record it as payment received. Is that clear? Simple. कौन सा सिस्टम करे अभी तक हम लोग? परचेज सिस्टम, सेल्स सिस्टम. नाउ सेल्स सिस्टम का एक इलस्ट्रेशन है. सेल्स सिस्टम में और एक चीज आ जाती है कि चेकिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर. चेकिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर इज दैट के क्या हम इसको उधार पे सामान दे सकते हैं या नहीं. बिग टाइम क्वेश्चन. Big time question. Okay. Then you need to check whether okay he's good enough, deservable enough for credit. Then yes, you can go ahead with it. Sales cycle simple: order received, order processed, goods dispatched, invoicing, recording in the accounts, payment received. You do not have to remember each and every term here. आप खुद सोचो क्या है ये. What is this? आपको ऑर्डर आता, आप वो ऑर्डर बना देते हैं, उसको डिस्पैच कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं, उतना ही हो रहा है ना. बट देयर इज अ सिस्टम विच इज डिजाइन कि ऐसे ही हम लोग करते हैं, ऐसे रैंडमली मैनुअली नहीं करते हैं. इट्स अ प्रोसेस व्हिच गोज ऑन अगेन एंड अगेन. देन सेल्स सिस्टम कंट्रोल्स, लाइक यू शुड कीप कंट्रोल सिस्टम्स इन सच अ वे दैट थिंग्स शुड नॉट गो रॉन्ग. मतलब जब सेल्स कर रहे हैं, like administration में 2 to 3 copies made of sales order for dispatch, क्रॉस चेकिंग करते रहते हैं ताकि इनवॉइस का अमाउंट आगे पीछे ना हो. व्हाट कुड गो रॉन्ग, तो ये ऑर्डर एक का दूसरा समझ में आ गया. कंट्रोल मेजर्स क्या है? स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ द, मतलब फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स व्हिच आर रिसीव्ड. फिर डिस्पैच क्वांटिटी में क्या गलत हो सकता है? गलत क्वांटिटी डिस्पैच हो गई तो वहां पे क्या है, आपको अच्छे से देखना है. एक यार्ड स्टिक होने चाहिए परफॉर्मेंस के. ओके, दिस इज डन, ओके लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ. समझ रहे हैं? सो इट्स मोर ऑफ looking out that how the performance is also happening so that you have control over it. Then we are done with sales system. Then comes payroll system. Payroll system is जो लोग को आप हायर कर रहे हो उन लोग को आपको देना है सैलरी. अब वो सैलरी देंगे कैसा, आप कैसा कैलकुलेट करेंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. इनफैक्ट ये सैलरी कैलकुलेट करना, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना इज इन चैप्टर नंबर 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर लेबर, where we account for the labor in almost each possible manner. अब जैसे कि देखो hours worked recorded, कितने घंटे काम करे, वो घंटे के रेट के हिसाब से आप पेमेंट लेंगे, पेमेंट पे करेंगे, सॉरी. देन ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम अगर है, इफ यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय पीपल फॉर ओवर टाइम, यू हैव टू पे देम फॉर देयर ओवर टाइम वर्क, टाइम वर्क. तो वो क्या रहेगा, ओवर टाइम ज्यादा तो थोड़ा सा ज्यादा एक प्रीमियम अमाउंट होता है विच दे पे. अगर सपोज नॉर्मली $10 पर आवर दे रहे हैं तो फिर ओवर टाइम के टाइम पे $15 पर आवर देना पड़ता है, because it's more the hours which have been invested. Pay rates obtained, pay per hour or per month, it goes on. इंडिया में पर आवर चलता है क्या? नहीं चलता. इंडिया में चलता क्या? पर मंथ, पर ईयर, या फिर जब दिल बोला जब. ज्यादा अगर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो अल्लाह क्या बोलते हैं उसको, ये एक स्लैंग होता था, मतलब वी यूज्ड टू टॉक अबाउट कि सैलरी क्या है तुम्हारे, बोलते शाबाशी बोल के बोलते थे.
सैलरी क्या है ब्रो? शाबाश, तो समझ, शाबाश ये क्या होता है? तो बस तारीफ करके छोड़ देते। याद रखो, योर एम्प्लॉयर विल बी रियली इम्प्रेस्ड एंड वो बहुत तारीफ करेंगे आपकी स्टार्टिंग में। उसका मतलब क्या है कि वही आपकी सैलरी। सो डोंट गेट स्लिप्ड ऑन टुवर्ड्स इट के सर तारीफ वारीफ सब जगह है, तारीफ से तो पेट नहीं भरता बोल के बोलना है तुम। ठीक है, नाउ पे कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द आवर्स वर्क, द रेट, डिडक्शंस लाइक देयर विल बी सम टैक्स डिडक्शंस व्हिच एन एम्प्लॉयर विल मेक। अब जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है, अब आप लोग को मालूम है दिस ईपीएफ डिडक्शंस डिडक्शंस क्या होता है? आर यू अवेयर कि सैलरी 50,000 होती है लेकिन आते आते हाथ में कट कट आके 40,000 कुछ आती है, 45,000 कुछ ऐसा आती है। तो वो पैसे क्या कट रहे हैं? व्हाट दैट, व्हाट दैट डिडक्शंस? टैक्स रहता, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रहता, और contributions towards your employee provident fund। अब जैसे कि 50,000 आपकी सैलरी है तो 50,000 के 50,000 आपको पूरे नहीं दे देते इन हैंड। आपको जो है सो एक 3,000 4,000 सॉरी उसमें से 5,000 टैक्स कट जाता, टैक्स चले जाता। देन एट द आफ्टरवर्ड्स देयर विल बी ईएफ पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, एम्प्लॉइज फंड एम्प्लॉयर्स फंड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन चले जाते। तो यहाँ पे क्या होता है, वो पैसे जो है जैसे कि टैक्स कटा आपका, तो टैक्स जो कटा आपका वो आप जब ईयर एंड पे टैक्स फाइल करते तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होती, आप जब फाइंड आउट करते कि जैसे कि 5,000 कट 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 होते हुए कितना हो गया, कुछ 60,000 रुपए कट हो गया। लेकिन जब आप टैक्स फाइल करने जा रहे हैं आपके पास खर्चे इतने ही ज्यादा है कि आपको उतना टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है 10,000 रुपए, तो होता क्या, वो 50,000 आपको वापस आते हैं एज अ रिफंड। एंड दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, हमेशा होता। एम्प्लॉय फंड एम्प्लॉयर फंड में जो ईपीएफ ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो पैसे क्या होते हैं, आपके जो सैलरी है उसमें से डिडक्ट हो जाती है, लेकिन जाते वो एक फंड में। सपोज कुछ साल के बाद अगर आपको वो फंड निकालना है तो यू कैन टेक दैट आउट, एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं कि वो चला गया, लेकिन कुछ एक टाइम पीरियड होता कि थोड़ा टाइम पीरियड रहा तो आपको ही फायदा होता। ये टैक्स कटने से भी आपको ही फायदा होता कि यू विल गेट सम अमाउंट इन सेविंग्स एंड स्टफ। नाउ गेट दिस स्ट्रेट, अभी अभी रिसेंटली अपना रवीश रवीश आई डोंट नो रवीश रामन, वेल आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, लेकिन इतना नाम है कि ही इज रनिंग बायजूस। तो बायजूस क्या करा रिसेंटली, ईएफ पीएफ जो है ही इज डिडक्टिंग ऑन द पेज, ओके, बट ही इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड एंड डिपॉजिटिंग दैट अमाउंट। मतलब सैलरी स्लिप में जैसे 50,000 देना है तो 45,000 कट कटा के दे दे रहे, लेकिन ही इज नॉट पेइंग टू द गवर्नमेंट, ही इज नॉट पेइंग टू दैट फंड। वो तो गलत हुआ ना फिर, मतलब पैसे तो खा लिए वो। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। If they are deducting a TDS, मतलब tax deducted at source or something like this, you should get that benefit, right? But उसका benefit नहीं हुआ मतलब the employer is a problem. Okay, so just think about it कि जिसके पास ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे तो बड़ी कंपनी चल कैसे रही? That's a big question mark. Okay. Now need to pay to the employee all this stuff. I hope you guys know what is deductions now. कल के पूछना है सर डिडक्शन क्या होता है? वैसे डिडक्शंस के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन वो टैक्सेशन में, पेपर नंबर 6 वो टैक्सेशन में है, नॉट हियर राइट नाउ। जैसे कि नाम अब हम बात कर रहे हैं कि आवर्स वर्क रिकॉर्डेड, ओवर टाइम रिकॉर्डेड, पे रेट्स ऑब्टेन्ड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन द वर्क व्हिच यू आर डूइंग, पे कैलकुलेटेड, डिडक्शंस कैलकुलेटेड, नेट पे टू द एम्प्लॉयर। तो क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कैसा है सैलरी पेमेंट करने का? पहले कितने घंटे काम करे, सेकेंड ओवर टाइम कितने घंटे काम करे, पेमेंट कैलकुलेट करो, नॉर्मल आवर्स के तरह कैलकुलेट करो, ओवर टाइम का भी कैलकुलेट करो, देन पे इज कैलकुलेटेड, देन there is any deductions, you deduct it, and then net pay paid to the employee. Simple process, yes or no?
जैसे कि वेरिएबल डेटा, व्हाट कुड गो रॉन्ग, इनकरेक्ट लेवल्स ऑफ वर्क रिकॉर्डेड, लीडिंग एम्प्लॉयज बीइंग ओवर और अंडरपेड। तो कंट्रोल मेजर्स क्या है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग सिस्टम्स रखो। आपका जो क्लॉक कार्ड है, द वे हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द एम्प्लॉय, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। जैसे कि फ्रॉडुलेंट क्रिएशन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे क्या है, you should have controls in place that these type of things do not happen. और कैलकुलेशन में कैलकुलेटिंग मिस्टेक नहीं होना, जैसे कि 10 into 10 20 100 हो गए। मतलब ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करना। You should have a system process for it कि you should put in that, okay, these many hours work, तो automatic जो है उसका पेमेंट कैलकुलेट होके what should be a salary कैलकुलेट हो जाना। Production reports of payments and stuff should be in place. फिर आ जाता कैश सिस्टम। कैश को कैसे मैनेज करेंगे आप, जैसे कि रिसिट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम। नाउ रिसिट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि हाउ डू यू कलेक्ट कैश। सपोज इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आप डायरेक्ट गूगल पे, फोन पे कलेक्ट करते जा रहे हो या कैश कलेक्ट करते जा रहे हो, फिर कोई खर्चा आ रहा है तो फिर उसी पैसे से आप खर्च करते जा रहे हो। देयर इज नो सिस्टम, देयर इज नो स्ट्रक्चर। Now, when there is no system and there is no structure, there is always problems. When there is no system, there is no structure. जैसे कि अभी यहाँ से कुछ पेमेंट आ गई, ये पेमेंट कर दो, वहां से कुछ पेमेंट आ गई, वो पेमेंट कर दो। Structured, calculated payments should be there. Structured, calculated income streams should be calculated in any organization. Okay, these are going to be the receipts, these are going to be the payments, and then the remaining will be a profit. Or if suppose हमको profit नहीं हो रहा है, then we have to get money from outside so that we meet our expenditure. Okay. Then payment system, suppliers को या तो आप by check दो या monthly you just keep on making the payments to them. Petty cash expense is like the small cash which is there in your hand. How do you manage it and what all type of expenditures you have in it? छोटे छोटे पेमेंट्स जो होते हैं रेगुलर, जैसे कि पोस्टेज, पेट्रोल डाल लो, छोटे काम के लिए जा रहे हैं, like that is petty cash. लेकिन suppose if you are running a haulage firm, जैसे कि trucking industry, petrol will be a big expenditure for them. Okay. Then cash system. Describe the process in which he does this. He fills out a petty cash voucher detailing the purpose of the claim. He should also record his department and the purpose. He staples the receipt to the back. If the expenditure is over a certain amount, which will vary according to supervisor ki signature, cashier will give him the money. The cashier records the payment in the petty cash book and codes it as sales travel. मतलब हर expenditure which an employee is doing, it should be properly recorded. अगर क्लेम कर रहे हैं कि मैं काम पे गया था ये चीज करने, यहाँ पे जो है खाना पड़ा, ये क्लाइंट को खिलाना पड़ा, तो वो सब खर्चे जो है जस्टिफाई अगर हो रहे हैं तो then the organization will give you that claim. Most of the time the organization will give you. अगर organization अच्छी नहीं है तो वो बात अलग है। Then comes inventory system. Linking to purchase system must be valued at year end. Work in progress, work at the end. Now this is more which we are dealing with management accounting. तो बहरहाल इन्वेंट्री सिस्टम में आपको ये देखना है कि व्हाट गुड्स आर यू परचेजिंग, वो प्रॉपर आर दे इन प्रॉपर स्टेट इन क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज. After that you have to look out for their storage, handling cost, and also look out for the stock out cost. So something which is understandable. इन्वेंट्री सिस्टम में आपको ज्यादातर यही देखना होता है कि आपकी इन्वेंट्री जो है सो क्वालिटी जो है वो क्वालिटी सेम रहेगी या नहीं, उसकी हैंडलिंग, उसका स्टोरेज, उसके स्टॉक आउट, इफ देयर इज एनी other demand coming in, what would be the lead time for that stock to reach out to your organization. These all are the stuff that you need to look out for. Then talking about control, organizational controls, efficient safeguarding assets. लॉक डाल के रखो बोल रहे हो लोग, मतलब काम हो गया तो लॉक डाल कर रखो, keep it safe, keep it secure. It's required, right? Keep it safe, keep it secure so that you prevent from errors, frauds, etc. क्यों करते हैं आप, सही बोलो. Safeguarding companies assets, why do you do?
कंपनी के ऐसे सेफगार्ड तो करना है, जैसे हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है हमको, तो बोथ वायरसेस से भी एंड एक्सटर्नल ब्रेकेजेस एंड एक्सटर्नल स्पॉइलिंग से भी हमको उसे बचाना है. ओके, so moving forward now, there are few testing understandings where you can put in your own example and say why this is important. You have to create your own examples. अच्छा खासा काम है आपके लिए. Now, why control systems are important in purchasing so that there is no fraud happening. Purchasing में बहुत ज्यादा fraud होता, इतना fraud होता आप सोच ही नहीं सकते. जे देखो, आप किसी को बोल रहे हैं कि मेरे तरफ से आप जाकर मेरे घर बनाने का मटेरियल खरीदो, तो what are the chances that he can inflate the bills? There are high chances. In the same manner, एक organization में can he inflate the bills? Inflate the bills तो नहीं हो सकता, लेकिन वो जो कोटेशन भेज रहे हैं ना उसको, आप हमारे पास से ले लो इतने में दूंगा, आप हमारे पास से ले लो इतने में दूंगा, आप हमारे पास से ले लो इतने में दूंगा. ठीक है, मैं आपका अप्रूव करता हूँ, आप मेरे को कितने देते हैं पर्सनली. ठीक है, मैं आपका अप्रूव कर देता हूँ, आप मुझे कितने देंगे पर्सनली. कंपनी नहीं आ रही बीच में अभी. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. आप बोलेंगे सर क्या सही भी होता है क्या, ऐसा पूछो. हाँ, बराबर होता है. जहाँ इंसान है वहां पर ये सब होता. आप मेरा एक दोस्त तो खुद एग्री कर रहा था उसके पैसे हो गया सब बॉडी. अगर 2 लाख का सामान रहा तो 20 एक लेवल का वही सब काम मटेरियल्स प्रोवाइड करना है बिल्डिंग के लिए. 2 लाख का काम रहा तो 5 लाख 10 लाख ऐसा रहेगा. हाँ, तो उसको कभी कभी जो है सो फ्रॉड का टर्म देने की जरूरत नहीं, वो मार्केट नो हाउ की वजह से भी होता कभी कभी. लेकिन सपोज कॉस्ट टू कॉस्ट तो कोई काम करते नहीं, एक वाजिबी मार्जिन अगर रख रहे हैं तो दैट शुड बी देयर. अगर वो नहीं है तो काम करने की भी जरूरत. लेकिन ऐसा इन्फ्लेटेड टफ कंप्लीटली, दैट्स नॉट दैट राइट. बट हियर इट हैपेंस, it happens, so to prevent that fraud, so you should make sure that the purchase or the purchaser should not have that strong or do not have that relationship with the persons who are going to give them quotations. उसके साथ ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना उनका. अगर हुआ तो फिर क्या होता, अपना ही नुकसान है. अपना वो क्या बोलते हैं, मिली जुली भगत करके जो सब खिचड़ी बना के ऑर्गेनाइजेशन को ही बेच देते हैं. इन द सेम वे सेल्स में जो सो क्या करना है, कंट्रोल्स, ताकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज क्रिएटेड. ओके, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज क्रिएटेड. वेजेस में ताकि सबको प्रॉपर सैलरी दिए जाए टाइम पे. अब जैसे कि देखो, मैं आपको बताता हूँ व्हाट नॉर्मली हैपेंस, जैसे कि कोई एम्प्लॉय को जाना है, ही वांट्स टू लीव. ओके, ही इज फेड अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज लीविंग. So what happens here is you will ask them कि you have to serve a notice period for 30 days. तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो जाना है, अभी जाना है. नहीं, 30 days you have to put a notice period. What should I do in 30 days? बोल के पूछता हूँ. तो मैं बोलता हूँ कि you have to teach others what you were doing. बोलते तो क्या करता हूँ, उन्हें जाकर सबको बता देता reasons why you have to leave this organization. तो सब रिजाइन करते. तो द पॉइंट हियर इज, वो एक फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय जब जाना चाह रहा है तो उसका एग्जिट वे बना दो ना, फिनिश, लेट इट गो. व्हाई टू स्पॉइल द कंप्लीट एनवायरनमेंट. ये जो नोटिस पीरियड जो होता है ना, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स व्हिच यू कैन कीप. जस्ट अगर wants to go, just let it go. If you keep that employee on notice period in the organization, पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाता. Overall, you should have those set of control measures in place all the time. Then cash के ऊपर कंट्रोल मेजर्स क्यों रखना चाहिए बताऊं मैं. इजीली कभी भी कहीं भी चले जा सकता है ना, थोड़ा देख समझ के रखना चाहिए, मैनेज भी अच्छे से करना चाहिए. Same goes with inventory so that you can prevent fraud, errors, and have good efficiency quality of it. Okay. So here comes some illustrations, safeguarding, why controls and systems are important.
so that you have proper quality, then you have proper efficiency of these all purchasing, sales, inventory, cash systems. You can prevent fraud and errors. लेकिन आप कितना भी fraud और errors को prevent कर लो, अगर होना है तो वो होके ही रहेंगे, कितना भी control measures रख लो. Okay, and these are like, we talking about this stuff looks like, ये तो normal है, manage हो जाता, लेकिन in day out organizations face these type of problems. Employee को manage करना मुश्किल है, उसको अच्छे से करना है, मतलब you should have all these measures, you should have, मतलब ऐसा नहीं बताना कि ये आपको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, but they should feel secure, they should feel independent and work on completely on a regular basis. And the same goes with inventories, cash, purchase orders, and sales structure. So here there's a question, but this question is again a detailed process which you have to write down. लेकिन write down करने की जरूरत अभी तो नहीं है, क्योंकि you guys can go ahead, show your creativity here. अभी तक कोई MCQ तो आया नहीं है हमारे पास, MCQ आएगा तो समझ आएगा. Then talking about automated systems. Automated systems का मतलब ये है off the shelf, मतलब कुछ ऐसी चीज जो already एक structured way में बनाई गई है, जैसे कि Tally software you can purchase like this and start using it. QuickBooks you can purchase like this and start using it. क्योंकि वो एक systemized software है. और या फिर what are the best practices other organizations were following, you can also follow it in that. Best practice easy enough for you. लेकिन this automated systems will be created only when you have done a lot of work. Okay, बहुत कुछ कर करके आपको एक lot of trial and error, ऐसा करके देखे, ऐसा करके देखे, ये system best है. ऐसे ही अगर हम लोग करते रहेंगे तो this system will move on और further होगा. Automated systems के लिए it's not just like this you get it, but after some point of time you will be able to go ahead with it. Okay. Then again, illustration. Describe 5 specific advantages of automating financial systems. क्या होगा? Easily prepare analysis of which products have sold, quantities, and use this to determine marketing and production plans. It can easily prepare aged inventory analysis as to identify slow moving designs. Age inventory analysis का मतलब ये वो है, सपोज आपका स्टॉक है, वो स्टॉक का एज कितना है, मतलब कब खरीदे थे और अब तक कितना है, कितने दिन से ये यही रुका हुआ है आपके गोदाम में, in your warehouse. So you can find out which are slow moving things, which are fast moving things, you can find it out. And same goes with receivables. आपके जो receivables है वो slowly आ रहे हैं या तेज आ रहे हैं. What is the age of the receivables? How are you able to know it? Because you are having automated systems in place so that you know what is coming in, what is going out. Then it can use passwords to protect confidential information. It can prepare an exception report detailing potential ghost employees and then investigate. मतलब कि कौन real है, कौन fake employees है. Fake employees को जो salaries देते जाकर public का पूरा पैसा खत्म कर दिया रामलिंगम राजू सत्यम computers में. What did he do? He kept on creating fake employees and the money was depleted there. Then comparisons of manual and automated systems. Manual systems के फायदे क्या है? Low capital cost, no computer experience, easy to correct errors. Ledgers are portable, हाथ से आप लिखकर. Disadvantages: it is slow performing, calculations are more थोड़े complex calculations हो गए तो आप नहीं कर सकते. And audit भी आप fast नहीं कर सकते इसमें. Whereas यहाँ automated में it's quicker, you can perform more complex transactions, fewer errors, more security passwords, and it goes on. के disadvantages क्या है? इसके training के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं. Less easy to correct error, systems can crash. ये क्या हो गया? These all are advantages and disadvantages of computerized system, like having more automated systems. Moving forward, advantages of automated financial systems: quicker, fewer errors, more security, easier to sort. ये same जो यहाँ पर हम लिखे हैं, ये
The same thing he said it again. Disadvantages: training cost, less easy to correct errors, system could crash. Less easy to correct errors because you should have proper authority to change those stuff. Okay. We've also come towards the end of this chapter. ये चैप्टर को आप जितना रियलिटी के साथ जोड़ के रखेंगे, the more close you keep it towards the reality, the much easier it will be for you. Is that clear, everyone? In the same manner, let us do these questions. You are given the following extract: the clerk multiplies the hours worked by the hourly rate to determine the gross pay. What does this extract describe? Procedure? That's a normal procedure or system. Okay, I'm not answering it right now. You can write down your answer. Question number 9 और आपका आंसर आप बाजू लिख लो. A लिखना है, A लिखो, C लिखना है, C लिखो, B, D, whatever you want. Then next, Ian is trying to design a system for processing of orders from customers. Which of the following is not likely to be an objective of the system? Answer it. To ensure that orders are processed promptly, to ensure that goods are only dispatched to customers who are likely to pay, to ensure that all orders are recorded, to ensure that customers sign to accept the goods. Answer कर लिए? Written down your answer. 10th के बाद लिख लो आपका आंसर, A, B, C, D, whatever you want to. Then, which of the following is not a stage in a standard purchase system? Purchase system का नहीं है ये हिस्सा. Receipt of goods, receipt of cash, placing of order, matching of invoices with orders, and goods received notes. Done. Which of the following would be earliest in the sales cycle for a company selling goods on credit to wholesalers? Done. सेल्स साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट, consider the following statement: inventory control system. इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में पहले क्या होता है, क्या चलता है, हाउ द प्रोसेस गोज ऑन? डन. जस्ट थिंक व्हाट कैन बी द फर्स्ट थिंग एंड व्हाट इज द लास्ट थिंग. इसके बाद फिर ऑप्शंस देख लो. डन. Which of these controls relates to the purchasing system? दोनों आंसर करो. And which of these controls relates to the sales system?
परचेस सिस्टम का तो समझ आ रहा। सेल्स सिस्टम के अंदर कंट्रोल क्या हो सकता? डन, सिंपल राइट। डन। Which of the following is not a system of automated system? क्या बने? ऑटोमेटेड सिस्टम का मतलब कि आपको मैनुअल इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता रहता है। इनवॉइस लिखने की जरूरत नहीं रहती, प्रिंट आउट कर ले सकते ऑल प्रोसेसेस और जैसे कि आप उसके अंदर कुछ भी ऐसा झोलझाल नहीं कर सकते या फिर कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते ऐसे ही मैनुअली। डन। डन। Primary purpose of control within an organization are to safeguard company assets, improve efficiency, and prevent fraud and errors. Next. Done. अरे ये तो और easy है ना? Which of the following are the features of an automated systems? Done. Now let us come. Question number 9 था ना वो? ये तो पूरा theoretical है. You should go through this. This is a single procedure, not a system. Part of procedure, part of a system. Then ये क्या था? What did you guys answer? D. B. B. EN is trying to design a system of a processing of orders from customers. To ensure that orders are processed promptly, yes. To ensure that goods are only dispatched to customers, likely, yes. Check the creditworthiness. You have to check the creditworthiness now. तो फिर वहाँ पे नहीं चेक करते ना कि पे करके क्योंकि वो तो पैसे मिल गए ना। नहीं नहीं, अगर वो कैश डिलीवरी है जरूरी भी अपने को आता नहीं, कैश ऑन डिलीवरी इज सेपरेट स्टफ अगेन, क्योंकि वहां पे रिटर्न का ऑप्शन, अगर वो कैश नहीं दे रहा तो आप गुड वापस लेके आ सकते हैं ना, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. Cash on delivery, he's not paying, take that back, go back. ये क्रेडिट वर्दिनेस क्या है मालूम? काइंड ऑफ एक बड़ा सिस्टम है, तो क्रेडिट वर्दिनेस चेक करना पड़ता आपको.
अरे नहीं मालूम था भाई, उन्हें नहीं पे करता बोल के आप भेज दिए। वो सब बात नहीं चलते हैं भाई। नेक्स्ट वाला 11th वाला क्या था? receipt of cash. Yeah, receipt of cash. Then 12th one, what did you do? Let me also see. Okay, that is, I guess, simple only, right? 12th wala. Yeah, because that's the order. Then 13th one, D by definition self. Then 14th one, anyone something else? Everyone is A. Chalo. Then 15th, 16th. 16th वाला wrong है। 15th वाला सही है। 16th wrong। 17 तो सबका सही है ना। 18th सही है। सही है, सही है। रॉन्ग किसका है 18th वाला? So let's just go back and check. 18th वाला किसको रॉन्ग आया? And what's the answer for 18th one? 2 and 3. Less potential for errors, improved securities. Yes. D भी हो सकता है ना, transact can easily be reviewed for logical sense. Yes, it can be. We can write it to Kaplan for sure. कि ये नहीं, I'm not joking. Transaction can easily be reviewed for logical sense. This is an advantage of an automated system. So if you have done 2 and 4, that is also we can look into it. ये तो सही था आप लोग का maximum. Then which of the following is not a feature of an automated system? Reduce chance of data corrupt. Data corrupt हो सकता है. In fact, automated system के disadvantages में यही है, data corruption. हाँ, कंप्यूटर क्रैश नहीं होता। Which of these controls relates to the sales system? ये किसका गलत गया? 15th वाला। You guys 15th one आंसर क्या था इसका? D, matching cash received to invoice sent. हाँ, this is actually only right. Matching cash payments to invoice received, calculating overtime payments, ये तो sales system का नहीं है। मैचिंग ऑफ कैश पेमेंट्स टू इनवॉइस रिसीव्ड ये कौन सा होता है? परचेस सिस्टम का है। ऑथराइजेशन ऑफ रिक्विजिशन फॉर परचेस का है। सेल्स का यही है खाली। चलो देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज अ रियली स्मॉल चैप्टर। सेम यही सिस्टम्स की बात करते करते वी कैन टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस फंक्शंस। रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस फंक्शंस, जैसे कि कहाँ गया? हेलो, वेयर डिड वी गो? जैसे कि ये परचेस सिस्टम है, अभी जो हम लोग जस्ट नाउ वी जस्ट टॉक्ड अबाउट परचेस सिस्टम। हाउ इज अकाउंटिंग गोइंग टू बी रिलेटेड टू इट? जैसे कि डिस्क्राइब हाउ द बाइंग डिपार्टमेंट लाइसेस विद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट when buying some leather to make handbags from DEF Limited, a new supplier. तो अकाउंटिंग सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं? क्रेडिट टर्म्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं।
Credit terms in the sense that when the payment is going to be happening, when is it going to be due? Then you can talk about what are the prices going to be. Then when is the payment made, or you can approve that payment. If it is a purchase department, you can approve payments. If it's a sales department, you can receive payments most of the times. Then order details to the leather. What all are the details of the quantity will also be added into the system. कभी दिन मौका मिले तो मैं I'll try opening up some stuff for you, like the real accounting systems, and also that you guys can see it. Then complete the following is the same thing which was there above. He's putting it down. Production. What would be the cost, allocation, absorption basis of it? You will not be able to do it manually. You need a proper accounting system for it. Budgeting, cost versus quality, checking out on your inventory, all these stuff. You can do it with the use of accounting and with the software stuff. Rather than doing it manually, doing it with accounting software would be highly useful for you. Then production ka ek illustration here. The product cost, measurement, allocation, absorption, budgeting, quality versus cost versus quality. अब जैसे कि ये देखो, the production department would estimate the quantity of raw materials required, and in conjunction with the purchase department estimate their cost. Together with the accounting department, overheads will be allocated to determine the full cost of the handbag. Whereas budgeting, the production department, accounting department, and marketing department will discuss how many bags, कैसे बनाना है, कितने बनाना है, कितना requirement हो सकता है. They can come up with it. Then the cost versus quality, looking into that, what could be the quality of the product and stuff, so that they can make a decision on it. And then inventory मैनेज करने के लिए आपको मैनुअली थोड़ी ना मालूम होते जाएगा कि अरे इन्वेंटरी खत्म हो गई, ऑर्डर करो. अकाउंटिंग सिस्टम को सीधे ही बताएंगे कि अरे इट इज ओवर, यू हैव टू फिल इट अप नाउ. नाउ कमिंग अप टुवर्ड्स मार्केटिंग. अब मार्केटिंग के बारे में हम लोग पहले बहुत डिटेल में बात किया है चैप्टर 2 में, बट हियर with this we can understand that how much you can according to your budget put towards the marketing area. Sales पे depend करता है कितना sales हो रहा है, उसके हिसाब से you can put this much in the marketing side, and then some portion towards the advertising side. The accounting department will help the marketing department in setting up a budget, that how much we should put towards the advertisement and stuff. Then pricing of it, market share, defining market share, understanding what is your market share and can you increase it. Most of the times you want to increase your market share, yes or no. Then service provision, all the services which you are going to give in, it's going to be nature of service which we are learning right now. If you remember, yesterday we were doing it in operation and service costing, yes or no. कल खाली एक ही चैप्टर कर रहे थे ना हम लोग. हाँ, we also started yes. We started with ABC, right? Yeah, and I guess that is also going to be